Hello everyone and welcome to DNA Education. Today we will be discussing the next topic of the chapter light reflection and refraction, that is refraction. Now, so far we have understood reflection concept, that whenever light rays fall on an object they bounce back. But actually जब भी कोई light rays किसी object पर fall करती हैं तो a part of the light rays are reflected back but a part is passed through the object. So whenever the light rays pass from one medium to another medium, the phenomenon of refraction takes place. Before starting with the concept, we have to understand about two terms, denser and rarer. For example, अगर air को consider करें तो उसके molecules दूर दूर होते हैं, they are far apart. ऐसे मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहते हैं. और अगर आयरन को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल एक आयरन बार है, तो आयरन के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं टाइटली और बहुत कम स्पेस होता है ना के बराबर. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेंसर ऑब्जेक्ट्स. So this is the first case where a light ray is entering from one medium to another medium. As you can see, the light is not bouncing back. In fact, the light is coming from one medium into the another medium. Suppose this is a rarer medium and this is a denser medium and this is normal. The light ray, as you can see, bends. This phenomenon of bending of light when passing from one medium to another is called reflection. So here you can see that when light ray goes from rarer to denser medium, it is bending towards the normal, and in this case when a light ray is entering from a denser to a rarer medium, it is bending away from normal. Now why this phenomenon of refraction or bending of light occurs? एक सिंपल चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा रोड पर, तो आपकी कार की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी एंड उसकी डायरेक्शंस भी काफ़ी चेंज होंगी. ऑन दी अदर हैंड अगर एकदम खाली रोड है और बहुत स्पेस है तो स्पीड से आपकी कार जाएगी और एक सेम डायरेक्शन में जाएगी. ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ अनदर मीडियम. दैट इज कि वो मीडियम कितना डेंस या कितना रेयर है. अगर मीडियम डेंस है तो लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ विच इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अगर मीडियम रेयरर है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. रिफ्रैक्शन का बहुत सारे कॉमन एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर एक पाइप किसी बकेट में जिसमें पानी हो उसमें हो और आप उसको साइड से देखें तो पाइप बेंट नज़र आता है जहाँ से वो पानी में है. या फिर अगर आप एक पेंसिल को किसी वाटर के कंटेनर में रख दें तो पेंसिल ब्रोकन अपीयर होती है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्योंकि इस केस में जब आप पेंसिल को देख रहे हैं या पाइप को देख रहे हैं तो एक पार्ट उसका एयर में नज़र आ रहा है और दूसरा वाटर में. एंड बिकॉज वाटर इज़ डेंसर दैन एयर तो लाइट की जो डायरेक्शन है दोनों पार्ट से वो अलग अलग हो जाती है. एक और केस होता है कि अगर आप किसी बकेट में पानी भर के उसमें एक कॉइन रखो एट द बेस ऑफ द बकेट. सपोज दिस इज अ बकेट फिल्ड विद वाटर और ये कॉइन है एट द बेस ऑफ द बकेट, और अगर साइड से आप इसको देखते हैं तो कॉइन यूजुअली रेज्ड नज़र आता है. अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो वो उतना डेप्थ में नहीं नज़र आता जितना वो एक्चुअली है. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. एज यू कैन सी लाइट रे जो आई से आती है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट जो हम देखते हैं अपनी आईज से वो हमेशा स्ट्रेट लाइन विजन होता है. जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग लाइट यहाँ मीट करती है और हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ नज़र आती है. एंड दैट्स वाई द कॉइन अपीयर्स रेज्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ बकेट फिल्ड विद वाटर. इस तरीके के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच आर एक्सप्लेन्ड वेरी वेल in our book of DNA Education Key Points Science Class 10th. Please refer to the book for more such examples and their explanations. Now we have to study about refraction through glass slab. First of all, glass slab पर्टिकुलरली एक क्यूबॉइड की तरह नज़र आती है. जैसा कि ये डायग्राम है, एक क्यूबॉइड होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, उसे हम ग्लास स्लैब कहते हैं. अगर ग्लास स्लैब के टॉप सरफेस को देखें तो वो रेक्टेंगुलर होता है. सपोज ABCD जो है ये टॉप व्यू दे रहा है ग्लास स्लैब का. नाउ वी हैव एन इंसिडेंट रे. दिस इज रेयरर मीडियम बिकॉज इट इज़ एयर. दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास सो इट इज़ डेंसर.
and again this is a rarer medium because it is air. So light entering at this surface will refract towards the normal because it is entering from rarer to denser medium, and now this refracted ray when will reach in this surface, it is now moving from a denser to a rarer medium, so it will again refract and will bend away from the normal. तो ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है एक ही लाइट रे का. फर्स्ट केस में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और सेकंड केस में इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स अच्छे से समझनी है. द फर्स्ट इज PQ. PQ here is the incident ray. The next is QR. QR जो लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर है, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे. Incident ray, refracted ray, and RS is the emergent ray, as the name suggests, because this is emerging out of the glass slab after refraction. That's why it is called emergent ray. Next is angle of incidence. Now we have to clearly understand how to mark the angles. Angle of incidence, as we know, is the angle between incident ray and normal. So this is angle of incidence. Then angle of emergence is the angle between emergent ray and normal. There are 2 angles of refraction in this case because we have seen कि 2 बार refraction हो रहा है, तो angle of refractions भी 2 होंगे. फर्स्ट केस में रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट. सिमिलरली जब लाइट रे यहाँ से यहाँ जा रही है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ये है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव एंगल 2. So there are 2 angles of refraction. M1 is the first normal, M2 is the second normal. We have to understand an important term here, that is XY. XY as you have seen, जब इंसिडेंट रे को स्ट्रेट लाइन में हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो एमर्जेंट रे और इस प्रोड्यूस्ड रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि ये दिस एंगल शुड बी 90 डिग्रीज. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इन दोनों रेज के बीच में, दैट इज XY. दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, lateral shift or lateral displacement. This lateral displacement indicates कि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर गई है. दैट मीन्स अगर lateral shift कम है, दैट मीन्स लाइट की बेंडिंग कम हुई है, बट अगर lateral shift ज़्यादा है, इट मीन्स इस पर्टिकुलर मीडियम ने लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट किया है और लाइट रे बहुत ज़्यादा बेंड कर गई है. वन मोर थिंग विच यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर इज, ये जो इंसिडेंट रे है इट अपीयर्स टू बी पैरेलल टू द एमर्जेंट रे. बेसिकली इन केस ऑफ ग्लास स्लैब, क्योंकि दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. इट इज़ अ रूल फॉर रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब. So this is all about refraction in glass slab. Based upon these phenomenon, there are a few laws which govern refraction. These laws are called laws of refraction. The first law is that incident ray, normal and the refracted ray all lie in the same plane. That means ये जो लाइट रेज हैं, these all will lie in the same plane, whether it is incident ray, refracted ray, emergent ray and normal. The second law says that sine of angle of incidence, this angle, and sine of angle of refraction, for this surface angle of refraction will be this. So the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is a constant. That means कि अगर हम किसी भी एंगल पे लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट करेंगे तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल जो भी आएगा उनके साइंस की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगी इफ़ वी कीप दीज टू मीडियम एज इट इज़. दैट मीन्स हम मीडियम चेंज नहीं करते हैं और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Now this law of refraction is specifically called as Snell's law. So if someone asks you to state Snell's law, you have to state the second law of refraction. Now let us understand about refractive index in detail. Refractive index actually एक ऐसी quantity है, अगर हम समझें in broader sense, तो ये ऐसी quantity है which helps us to compare in the optical densities of the two medium. मतलब
अगर एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम है जहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, तो ये क्वांटिटी हमें ये बताती है कि कंपैरेटिवली कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक हम केस लेते हैं जिसमें ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है और लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। N stands for refractive index and it is read as refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि medium 2 कितना रेयरर या डेंसर है as compared to medium 1। The formula will be speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। Similarly, refractive index of medium 1 with respect to 2, दैट मीन्स हम ये देखना चाहते हैं कि मीडियम 1 कितना रेयरर या डेंसर है एज कंपेयर टू मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो इन बोथ दीज केसेस we can clearly see that the formulae are actually reciprocals of each other. So we can say that refractive index of medium 2 with respect to 1 is 1 upon refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So these are the formulas which will help you to solve numericals related to refractive index. Air has minimum refractive index, that is 1.003. Actually, for vacuum the refractive index is completely 1. But vacuum condition बहुत ideal condition है जो कि अर्थ पर या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं है। एज यू कैन सी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड। एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है मटेरियल्स में विच इज 2.42। देयर इज अनदर टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तब यूज करते हैं अगर दोनों में से हमारा एक मीडियम एयर हो। So refractive index of a medium, or we can say absolute refractive index of a medium, is given by speed of light in air and speed upon speed of light in medium. Speed of light in air is fixed, that we all know, 3 into 10 की power 8 meter per second. So in this case, if refractive index of a medium is given, we can calculate the speed of light in that medium, or vice versa, because this has a standard value. Now, after this concept, we have to understand about lenses. So far, we have understood about mirrors, because mirrors do not allow light to pass through them. In fact, it reflects it back. But lenses, as you know, lens is a piece of glass and the light ray actually enters and gets refracted into the lenses. Just like mirrors, we have two types of lenses, that is convex lens and concave lens. Convex lens, as you can see, both the surfaces are curved outwards, and concave lens, both the surfaces are curved inwards. As you can see in these diagrams, that light ray is not bouncing back, it is passing through the lens and then entering into their respective areas. Now let us understand how this works and some terms related to lenses. Just like mirrors, we can assume that each part of the lens, that is, suppose it is a convex lens, so one part is a part of a sphere and another part is also a part of sphere. As you can see, this part of lens forms the sphere and this part also forms the sphere. अब अगर हम इनके diameters को connect कर देते हैं तो जो central point lens का है, that is called optical center, और दोनों ही spheres का जो radius है या center of curvature है, that indicates 2f1, 2f2, and half or midpoint of radius and optical center is the focal length. So because of two refracting surfaces in lens, we see that there are two focus and two radius of curvatures, and Mn is called the aperture of the lens. As you can see, in convex lens, the parallel light rays converge at a point, and hence it is called as a converging lens, and it behaves like a concave mirror, because concave mirror is also a converging mirror. In case of concave lens, you can see that the parallel light rays are diverging from their path, hence it is called as a diverging mirror, and it behaves like a convex mirror, because in last sessions we have discussed how convex mirror acts as a diverging mirror. There are several uses of convex lens.
such as it is used in magnifying lens, because in magnification we need to see enlarged images of objects, which is formed in this case in cameras and in eyeglasses. Concave lenses are used in telescopes. As you can see, it is a diverging mirror, so it helps to see far away objects in space and other things. In telescopes, various combinations of lenses are used so that far away images can be seen. It is also used in eyeglasses, lasers, flashlights and binoculars, because it has to diverge the light rays or see distant objects. So all this involves how there are various important uses of concave and convex lenses. For more details, you can log into www.dnaeducation.com. Thank you.